Jai Hind दोस्तों. Today I will discuss about the Central Protection Authority, which was established under the Consumer Protection Act 2019. इस अथॉरिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है? Normally, consumer as a complainant can approach to district consumer forum, state consumer forum या फिर national consumer forum. लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने एक अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जो कि कंज्यूमर एज ए क्लास के रिलेटेड कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगी. लेट अस डिस्कस ए बिट मोर अबाउट दिस सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी. इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको किस तरह की पावर्स हैं, एंड हाउ यू कैन अप्रोच दिस सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी to seek remedy against the violation of consumer rights as a class. So, Central Protection Authority के objective क्या है? First thing we need to understand is it addresses the problems of the consumer which are representing as a class, particular class. So, it will cover the violation of the rights of the consumer. It will cover complaints which are related to the consumers as a class against the unfair trade practices as well as false or misleading advertisements. तो where should we file the complaint? अभी तक तो हमने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम ही देखा था. बट under the Consumer Protection Act, Central Protection Authority के related complaints you can file to the district collector, commissioner of the regional office, and the Central Protection Authority. So district collector would be the IS officers who are controlling the administration of a particular district, and the commissioner of the regional office belongs to the various commissioners established by the Central Protection Authority. So अभी तक का स्टेटस ये है, सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का चीफ कमिश्नर इज बेस्ड इन दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ द कमिश्नर्स लाइक रीजनल ऑफिसेस के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है. अच्छा, वेयर टू फाइल कंप्लेंट्स तो हो गया, लेकिन पावर्स क्या है इस अथॉरिटी को? ये अथॉरिटी प्रिवेंट कर सकती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को. ये अथॉरिटी कैन स्टॉप पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग है. Obviously, its objective is to prevent the violation of the consumer rights of the consumers as a class. अच्छा, ये authority can take suo motu action also, or obviously on the basis of complaint, this authority can order investigation for the violation of the consumer rights. इस अथॉरिटी को एक और पावर है. अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम या एनसीडीआरसी में ऐसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिसमें कंज्यूमर्स एज ए क्लास के राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये अथॉरिटी उन प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन भी कर सकती है. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज this authority has power to issue necessary guidelines to prevent the unfair trade practices and protect the consumer's interest. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हो गया, राइट? सो अभी तक वी अंडरस्टूड दैट सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है इन मैटर्स वेयर द वायलेशंस ऑफ द कंज्यूमर एज ए क्लास इज बीइंग अकरिंग. सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास क्या पावर्स है? या तो अथॉरिटी विल इंस्ट्रक्ट द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर और द सर्विस प्रोवाइडर to withdraw the goods or the services which are dangerous, hazardous and unsafe. Consumer as a class के rights violated होते हैं, तो authority has power to instruct reimbursement of the prices of the goods or the services to be paid by the consumers. And in the end, it can discontinue the practices which are highly unfair and prejudicial to the consumer's interest. अच्छा, एक्ट के अंदर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स में के रिलेशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को पीनल्स पावर्स भी दे रखी है. एडवर्टाइजमेंट तो डिसकंटिन्यू होगा ही होगा. द सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी कैन लेवी the penalty up to 10 lakhs
एंड अगर दूसरी बार वायलेशन होता है, सब्सिक्वेंट वायलेशन होता है, तो द सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी कैन लेवी a penalty of up to 50 lakh rupees also on the service provider or on the advertiser or on the manufacturer or the producer. Next point is very critical. It can prohibit the endorser from endorsing the products or services for 1 year and subsequently up to 3 years. Many influencers are there who are actually endorsing some of the products or the services which are affecting the rights of the consumers as a class. Now, the Central Protection Authority has rights, has powers to prohibit such endorsers from endorsing the products or services for initially for first year, and then subsequently up to 3 years they can be banned from endorsing such kind of products or services. ओवरऑल अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो कंज्यूमर्स के पास एक एडिशनल फोरम भी ओपन अप हो रहा है अदर देन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम. दैट फोरम इज द सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी. So various home buyers, various associations can approach the Central Protection Authority to seek investigation and accordingly pursue penal provisions of the Act to ensure that the rights of the consumers as a class can be protected. So अभी status Central Protection Authority का क्या है? Of now we have one Central Protection Authority which is operational with effect from 29th of July 2020. And we have a chief commissioner. We have Shri Anupam Mishra as a commissioner. Then we have Shri Pramod K. Tiwari, जो कि Director General BIS के थे. He is heading the Director General Investigation of the Central Protection Authority. And then Shri Vineet Mathur, who is the Additional Director General Investigation in the authority. So I believe that this brief video would have assisted you in understanding the powers and rights of the consumers as a class, and where you can now even approach to a Central Protection Authority also, in addition to the regular district, state, or national consumer forums. If you have any specific questions, you can write to us at info@nyaytantra.com, or you can speak to us at this number. Thank you very much for going through this video and have a good day. Jai Hind.